Hello dear children, welcome to the class. Now in today's class, we'll be taking certain doubt questions from the topic preparation of trading account, and we'll be learning how to prepare profit and loss account and how to calculate the operating profit, and finally how to prepare the balance sheet. So the problem is that we have to calculate closing stock when opening stock 20,000 is given, cash sales 60,000, purchases 70,000 rupees, credit sales 40,000, and the rate of gross profit on cost means on cost of goods sold is 33 1 by 3%. Now see, we can calculate the figure of total sales because total sales is equal to cash sales plus credit sales. Now if we are going to add these two, we are going to get 60,000 cash sales and 40,000 credit sales. So the total sales are 1 lakh. ठीक है बेटा, हमारे पास टोटल सेल्स है, हमारे पास रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 33.3%. अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हमें नहीं पता क्या है, सो लेट cost of goods sold be X. Fine. And the gross profit is 33 1 by 3% of X, because the rate of gross profit on cost is 33 1 by 3%. So 33 1 by 3% is, if we'll solve, 33 into 3 is 99 plus 100. So 100 upon 3% means upon 100. So if we'll simplify it, that means 1 upon 3 of X. Fine. So gross profit is 1/3 of X. And we know that total sales is equal to cost of goods sold plus gross profit. We did this formula in the last class. Cost of goods sold plus gross profit is the total sales. Now let's substitute the value. Total sales are 1 lakh. Cost of goods sold is X. Gross profit is X upon 3. Now when I'll solve this, we are going to get, which implies 1 lakh is equal to, LCM is 3, 3x plus x is 4x. So next step is 1 lakh. It is 4x upon 3. Now if I want to calculate the value of x, I'm going to take this fraction on the left hand side, and it will be we'll take it's reciprocal. So 4 upon 3x, when 4 upon 3 will change this side, it will become 3 upon 4. It is equal to x. Fine. So the value of x is, if we simplify it, is 25,000. 25,000 into 3. 25,000 into 3 is 75,000. So the value of x is rupees 75,000, and this is cost of goods sold. So 75,000 is the value of cost of goods sold. Now we have calculated cost of goods sold is equal to rupees 75,000, and we know that cost of goods sold is equal to opening stock plus net purchases plus your direct expenses minus closing stock.
minus closing stock. अब बेटा ओपनिंग स्टॉक है 20,000, cost of goods sold is 75,000. We are substituting the values. Net purchases given to us 70,000. There are no direct expenses, and then less closing stock be Y. Let closing stock be Y. So let's calculate now. 75,000 is equal to 90,000 plus Y, which is your closing stock, which implies, sorry, minus Y. Let's now take Y on the left hand side. Y, when we'll take on the left hand side, will become plus Y. So Y is equal to 90,000. We'll take 75,000 on the right hand side. Plus 75,000 will become minus 75,000. And the value of closing stock will be 90,000 minus 75,000, which is equal to 15,000. So rupees 15,000 is the value of the closing stock. I hope that the solution of this problem is clear to everyone. Now let us proceed towards the preparation of our profit and loss account. First, the meaning of profit and loss account. Profit and loss account is prepared after preparing the trading account. It is prepared to calculate the net profit or net loss, यानी कि business का final net profit या net loss क्या आया है for a particular accounting period. This we calculate by preparing profit and loss account. Profit and loss account is an account into which all gains and losses are collected in order to ascertain the excess of gains over the losses or vice versa. ठीक है, तो तभी हम इसका जो हमने नाम दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो हम बैलेंसिंग फिगर इसकी आती है, either it is going to be a net profit. Net profit means a total profit which we are going to get from which we are going to get in the business by running all operating and non-operating activities, or net loss again which we are going to bear by running all operating and non-operating activity, क्योंकि business की कुछ non-operating activities भी होती हैं. So the features of profit and loss account. First is the second stage in the preparation of final accounts, क्योंकि पहले trading account बनता है, and the second stage in the preparation of final account is preparation of profit and loss account. It relates to a particular accounting period and it is prepared at the end of that period. तो तभी हम profit and loss account के ऊपर लिखते हैं for the period ended, क्योंकि profit and loss account total one accounting year की जो ट्रांजेक्शन्स है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, उसका इफेक्ट शो करता है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ period, for one accounting year, for the period ended, let's say 31st of March 2019. Another important feature of profit and loss account is it is prepared on accrual basis of accounting. Accrual basis system of accounting पे ये prepare होता है, यानी कि हम इसके अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर के जितने एक्सपेंसेस और इनकम हमारे होते हैं, हम उनको सबको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस और इनकम कैश में हुए हो या ना हुए हो. इट इज क्रेडिटेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, एंड इनकम्स फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सबसे पहली आइटम ग्रॉस प्रॉफिट आती है, एंड देन वी रिकॉर्ड द अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, and it is debited with indirect expenses, both indirect operating expense, which includes, if we recall, office and administrative expense and selling and distribution expense, and your non-operating expense and other losses. The balance of this account is either net profit or net loss. If the credit side is greater than the sum total of credit side is greater than the sum total of the debit side of profit and loss account, then we have got net profit. Otherwise,
If it is the other way around, if credit side is less than the debit side, then it is going to result into net loss. The capital of the owner increases or decreases by the balance in this account. हम क्या करते हैं बेटा, net profit आता है तो हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं. कैपिटल अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट. बट अगर लॉस आता है तो कैपिटल ऑफ द ओनर गेट्स डिक्रीज्ड. वी सबट्रैक्ट नेट लॉस फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द ओनर which is shown in the balance sheet. So this is the format of profit and loss account. Profit and loss account for the year ended, and we write here the last day of the financial year because profit and loss account is prepared for one complete financial year. Left hand side is the debit side, right hand side is the credit side, and we record all the revenue expenditure. The nature of those expenditure, revenue expenditure is indirect operating. इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग के अंदर बेटा कौन कौन से आते हैं हमारे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक योर सैलरी, रेंट, फाइन, एंड योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं, लाइक योर एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड. दीज आर ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. Along with indirect operating expense, we add non-operating expenses. Non-operating expenses, they are also shown on the debit side of profit and loss account, and on credit side of profit and loss account we transfer gross profit from the trading account, and if there is a gross loss is shown on the debit side of profit and loss account. Gross loss, it is shown on the debit side of profit and loss account, and gross profit is shown on the credit side of profit and loss account. And to this gross profit we add operating, indirect operating incomes and other non-operating income. Other non-operating income means your dividend received, interest received, commission received, rent received. So all the non-operating incomes are added on the are shown on the credit side of our profit and loss account. Now this was just a brief outlay of profit and loss account. This is the whole format of profit and loss account. Left hand side, again, it is the debit side of profit and loss account where we record all the operating and non-operating expenses and losses. And this is the credit side of the profit and loss account where we record all the operating, indirect incomes and your non-operating income. Now see the first item. If it's a gross loss transferred from trading account, so that is debited to profit and loss account, and your gross profit, you can see it is shown on the credit side of the profit and loss account. Then you see all salaries, rent, stationery and printing, postage and telegram, audit fee and legal charges, telephone charges, insurance premium. These are all example of office and administrative expenses. Business promotion expense, it's a selling and distribution expense. Again, continuing with office and administrative expense, repair and renewal, depreciation, interest, sundry expenses, conveyance, traveling expense, bank charges, establishment expenses, general expenses, car running and maintenance expenses, electricity expense. Fine. So these are all office and administrative expense. Now loss by fire or theft. This is non-operating. It's a loss. Fine. Then commission, advertisement. Advertisement is your selling and distribution expense. Freight and carriage outward is selling and distribution expense. Bad debt is a loss. On the credit side,
rent received, discount received, commission received, interest received. These are all our non-operating income. Bad debt recovered, income from investments, dividend on shares, again non-operating income, by miscellaneous revenue gain, and by income from any other sources, again non-operating income. So all these non-operating incomes are shown on the credit side of the profit and loss account. And if my credit side total is greater than the debit side, then we are going to get the net profit. You can see the last item on the left hand side, debit side is your net profit, and this net profit is added into the capital, and the capital is shown on the liability side of the balance sheet. This capital is added in the, this net profit is added in the capital, and if your debit side is greater than the credit side, then the resultant balancing figure will be net loss, and net loss is going to be subtracted from the capital, which is shown, this is subtracted from the capital, which is shown on the liability side of the balance sheet. I hope that the format of profit and loss account is clear to everyone. Let's learn the distinction between trading account and profit and loss account. Now, trading account is a part of profit and loss account, and profit and loss account is the main account. We all of us know that the gross profit or gross loss is ascertained from your trading account, whereas the profit and loss account is prepared to ascertain the net profit or net loss of the business. The balance of trading account is transferred to profit and loss account, and the balance of profit and loss account is transferred to the capital account of the proprietor. Items shown in the trading account are purchases, sales, stock, direct expenses, etc. And items like indirect expenses related to sales, distribution, administration, finance, etc. are shown in the profit and loss account. Now, the distinction between gross profit and net profit. Kindly go through the difference between gross profit and net profit on your own. It's very simple and easy. Now, we are now proceeding towards the next topic, and the next topic is your division of profits. There are two types of profit. Now, profits are divided into your operating profit and your net profit. Now, operating profit means the profits from operating activities of the business. Fine. So, it's an excess of gross profit over operating expenses. Fine. So, when we are talking about operating profit, that means हम वो profit की बात कर रहे हैं जो कि business की main core जो activity है उसको carry out करके जो profit earn किया है. Fine. Whereas all of us know that the amount of business is invested in other some non-core activities also, and the net result of the non-core activities and operating activities, fine, is reflected by the figure of net profit. So net profit means the excess of revenue over expenses and losses, and net profit is arrived by deducting operating expenses from operating profit as well as non-operating profit. Now, what do we mean by this? Let's take this formula first, and then we will be doing certain practical problems. तब आपको ये और अच्छे से clear हो जाएगा. Operating profit is profit from operating activities of the business, है ना? तो जो business की main core activity है उसको run करके जो हमारा profit हो रहा है उसको हम operating profit कहते हैं. तो operating profit कैसे निकलेगा? See, net sales, obviously net sales is the figure of your revenue which the business earn by selling the goods and services in which the business deals in. उसमें से हम सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ऑपरेटिंग कॉस्ट किससे रिलेटेड होती है?
our cost of goods sold, office and administrative expenses and selling and distribution expense. यानी कि net profit minus operating cost, that is cost of goods sold. cost of goods sold मेरी net profit minus cost of goods sold से मेरे पास आ जाता है gross profit. Fine. So gross profit में से अगर मैं इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है. और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे कौन कौन से होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. The other way for finding out gross profit is operating profit is from the net profit. See, जब मैंने net profit calculate किया तो non operating income को मैंने एड बैक कर रखा था और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रखा था. तो मैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि नेट प्रॉफिट निकालते समय मैंने सब्ट्रैक्ट किए थे उनको मैं ऐड बैक कर देती हूँ. ठीक है. और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको मैंने नेट प्रॉफिट निकालते समय ऐड किया था, उनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई एम गोइंग टू गेट द फिगर ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. So there are two formulas. I hope the meaning of operating profit and the formulas are clear to everyone. दोबारा रिपीट कर रही हूँ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा वो प्रॉफिट होता है जो कि बिजनेस अपनी मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी को रन करके अर्न करता है. इसको निकालने के दो फॉर्मूला है, ईदर फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट. नेट सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करती हूँ तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. और ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. तो मेरा पहला फॉर्मूला बन जाता है नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. And operating cost is nothing but cost of goods sold plus office and administrative expenses and selling and distribution expense. Second formula is operating profit is equal to net profit plus non-operating expense minus non-operating income. Now, let us take some practical questions, some practical problem to understand the concept of operating profit. बेटा ये सेम वही लेआउट है जो भी हमने स्लाइड में देखा था. हम ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लेकर आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से. तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग ही होता है ना. ग्रॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. रीजन क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकलता है सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट इज योर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना. तो ये तो दोनों ही आइटम ऑपरेटिंग होती हैं. तो इसका जो नेट रिजल्ट है ग्रॉस प्रॉफिट है. ग्रॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब जब हमने नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं. उसमें से इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बेटा? मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. फाइन. अब ये वाले जो एक्सपेंस होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सपेंस हम माइनस करते हैं और ये होते ऑपरेटिंग है ना. दीज आर अवर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारे पास फिगर आ जाती है नेट प्रॉफिट की. ऑब्वियसली द नेट प्रॉफिट तभी आता है जब हमारी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड. फाइन. अब मुझे बेटा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मैं ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसको हटा देती हूँ. नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अगर मैं रिमूव कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा दूं तो मेरे पास तो सब कुछ ऑपरेटिंग ही है ना. तो इसलिए हमने क्या किया, लेट स्टार्ट विद द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट को निकालते समय नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हुई थी. मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. फाइन. और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं ऐड बैक कर देती हूँ. नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं ऐड बैक कर दूं तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. सो द फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, यही हमने डिराइव किया था लास्ट स्लाइड में. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू योर नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. और अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या था हमारा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
अगर ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है तो मैं, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला. The second formula for calculating operating profit could be, ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है तो उसके अंदर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम वो ऐड हो जाएंगी, और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएं तो मेरा जो फॉर्मूला बनता है, सी इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम एज सच कोई होती नहीं है सिवाय डिस्काउंट रिसीव्ड के. फाइन. सो मेरा फॉर्मूला जो बन जाता है वो बनता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. फाइन. So let us take this problem. We have to calculate the operating profit from the following particulars. Net profit given is 1 lakh. Rent received 10,000. Interest on loan 20,000. Gain on sale of machine is 15,000 and donations 2,000. Fine. Now let's start. देखो net profit दिया हुआ है. Net profit में से again जितनी non operating income है उनको हम subtract कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एड बैक कर देंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट द फिगर ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू योर नेट प्रॉफिट. अब रेंट रिसीव्ड बेटा ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. फाइन. सो वील सब्ट्रैक्ट लेस रेंट रिसीव्ड. इंटरेस्ट ऑन लोन ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सो वी विल एड बैक इंटरेस्ट ऑन लोन given. Then gain on sale of machine. Fine. Gain on sale of machine, again it's a non operating income, so we'll subtract gain on sale of machine. Fine. And donations. बेटा डोनेशन भी हम हमेशा तो देते नहीं, so donation is also our non operating expense, so less donations. Fine. So let's substitute the value to get the figure of operating profit. Operating profit is equal to, let's substitute the figures now. Net profit है बेटा मेरा 1 lakh. 1 lakh में subtract करेंगे 10,000. Then interest on loan added 20,000. Gain on sale of machine less 15,000. And less donations less 2,000. So the resultant figure is it is 93,000. अब बेटा मैंने यहाँ पर डोनेशंस को डोनेशन रिसीव्ड माना है. फाइन. डोनेशंस को रिसीव्ड माना था, तभी मैंने यहाँ पे डोनेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. आई हैव ट्रीटेड डोनेशन एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशंस दिया हुआ है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशंस दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे कि ये जो डोनेशंस हैं ये डोनेशंस हमने पे करी है. ठीक है. अगर डोनेशन पे करी है तो ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस शुड बी एडेड बैक, सो वी विल एड बैक द डोनेशंस 2,000 and the answer of operating profit will be 97,000. अगर क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये डोनेशंस पेड है. डोनेशन रिसीव स्पेसिफिकली मेंशन होगा. And you see we have subtracted all the non-operating income and added back all non-operating expenses and we got the figure of operating profit. I hope the concept of operating profit is now clear to everyone. Now the last financial statement which we prepare is the balance sheet. Balance sheet is also known as position statement. Balance sheet is a statement which set out the assets and liabilities of a firm at a certain date, and that certain date is the last day of the financial year. Now the characteristics of the balance sheet
are, it is prepared at a particular date, not for a particular period. तभी हम लिखते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, on the top we write balance sheet as at 31st of March, let's say 2020. It is prepared after the preparation of profit and loss account. Profit and loss account का जो profit या loss होता है, that is adjusted in the capital account of the proprietor and shown on the liability side of the balance sheet. It shows the financial position of the business as a going concern. The balance sheet is not an account. It is a statement. Balance sheet, a 1 mark question can be asked. Balance sheet account hai? No, it's not a account. It is only a statement of assets and liabilities. On the left hand side, the liabilities of the business are shown, whereas on the right hand side, the assets of the business appear. And all of us know that the total of asset side must be equal to the total of the liability side. That is, the two sides of the balance sheet must have the same totals. This is a form of a balance sheet. See, there are two ways of preparing the balance sheet. First way is according to liquidity and the second is according to permanence. ये जो balance sheet बेटा आपके सामने बनी हुई है, this is according to the liquidity. Fine. The more liquid the asset is, that is going to be recorded on the top. और जितना ज्यादा कोई asset या liability permanent होगा या long term के लिए होगा, that is to be recorded at the bottom. Fine. Liquidity के basis पर ये balance sheet बनी हुई है. See, on the left hand side, we record all the liabilities. We write liabilities instead of particulars. So we record liabilities on the left hand side. और आप पहली liability है हमारी यहाँ पर recorded sundry creditors. Fine. Bills payable, bank overdraft, employee provident fund. And you see, slowly and gradually हम current liabilities से long term liabilities की तरफ move कर रहे हैं. That is your employee provident fund, then loans, mortgage, reserves or reserve fund, and finally the most permanent figure which is there in the balance sheet is capital. क्योंकि capital हम owner को, capital is also the internal liability of the business और हम इसको return तभी करते हैं owner को when the business is wind up. That is why जब हमने liquidity के basis पर balance sheet को prepare किया तो the most permanent item we have written in the last. और capital के अंदर net profit हम add करते हैं, interest on capital is also added, then drawings are subtracted. We know that income tax is a personal drawing, is a drawing from the proprietor's capital, so we subtract income tax also from the capital, and interest on drawing is also being subtracted. Net loss, so the items to be added in the capital are interest on capital and net profit, and items to be subtracted from capital are drawings, income tax, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड नेट लॉस. ये चारों से हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर को मिलता है फॉर इन्वेस्टिंग द कैपिटल इनटू द बिजनेस, सो दैट इज व्हाई इट इज एडेड इन द कैपिटल अलोंग विद द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट. ऑन द राइट हैंड साइड वी रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स. अगेन ये एसेट्स हमने अभी कैसे रिकॉर्ड कर रखे हैं? द एसेट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड फ्रॉम करंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट. Fine. So current assets में cash in hand, petty, including petty cash, cash at bank, bill receivable, sundry debtors, then loans, debit balance and closing stock, loose tools. Now see, we are now moving towards the fixed assets, investments, furniture and fitting, plant and machinery, land and building, freehold and leasehold land or leasehold land, business premises, patents and trademarks, and goodwill, that is an intangible asset. और बेटा अगर हमने बैलेंस शीट बनानी हो अकॉर्डिंग टू परमानेंस, so it is going to be the opposite. Capital is going to come on the top.
followed by non-current liabilities, that is your long-term loans, mortgage, reserves, etc. And then finally, you will record all the current liabilities in the last. Similarly, all your fixed assets, both tangible and intangible, are going to be recorded on the top when the balance sheet is being prepared on permanence basis, and your other assets, that is your current assets, are going to be recorded in the last. I hope that the preparation of balance sheet is clear to everyone. Hope all of you have enjoyed the learning today. That's all for today from my side. Thank you very much.